Friends, I'm Adhan Singh in front of you. Today we are going to study the topic crop production and management from grade 8 science. So let's begin. So now we have the objectives to be learned: food from plants, agriculture practices, increasing crop yield, nitrogen fixation and nitrogen cycle, food from animals. So let's begin with the topic food from plants. Food from plants, growing plants and rearing animals for food, clothing, and other useful products is called agriculture. And as you know, that plants of the same kind which are grown on a large scale for food or clothing, etc., is known as a crop. So now we will know that, and you even also be knowing that based on growing season, the crops are divided into two categories: the Kharif and the Rabi. So what are Kharif crops and when they are grown and harvested? So the Kharif crops are grown in June and harvested in October. And some of the examples of the Kharif crops are rice, maize, cotton and groundnuts. Rabi crops are grown in November and harvested in April. Wheat, barley, pea and gram are the examples of Rabi crops. So now let's proceed with the next slide. Now we have the another topic, agriculture practices. What is a agriculture practice? Now whenever the farmer is growing the crops, he or she are going through a sequence, a pattern which is over a period of time. This pattern is known as agriculture practices. So what they do, the first step is soil preparation. So in soil preparation, they do the further things which are shown here: plowing, leveling, and applying fertilizers. So the next step they do is selection and sowing of seeds. Selection and sowing of seeds means selection of the best quality in seeds and sowing. We will discuss it further. The other is irrigation. It is simply watering of the crops. The next topic we will be dealing is weeding and crop protection. Weeding and crop protection. Okay, then the next topic is harvesting and storage. So let's start with the soil preparation. Soil preparation, it involves plowing, leveling and applying fertilizers. What is plowing? The process of loosening and turning the soil is called plowing or tilling. You generally have seen in the field that the farmers use the plowers to make the soil more loose so that they can give the seeds in the correct depth so that the plants could grow very easily. The problem should not be occur there. So this process is known as plowing. So the next slide, it is why do we do plowing? So the reasons to do plowing is it allows the roots to reach deeper into the soil. This helps to fix the plant to the ground. And the next is it helps the soil to retain the moisture for a longer duration. It helps in bringing nutrient rich soil top. Okay, so the next is it helps in trapping air in the soil. The next point is it helps the soil to mix with the fertilizers. Whatever we use the fertilizers, they can get the mix completely with the soil. So we do these all this process plowing. So the next is leveling. What is leveling? Even after plowing, प्लॉइंग के बाद भी क्या होता है कि बिग लम्स ऑफ जो सॉइल होते हैं ना वो बच जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हें क्रश करते हैं थ्रू वुडन एंड आयरन प्लैंक्स जिन्हें हम लेवलर्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग लेवलिंग कहते हैं. अब अप्लाइंग फर्टिलाइजर, व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? तो मेनली we will knowing that even after a period of time when we are growing a crop regularly in a field, the crop is using the nutrients of the soil and continuously making the that crop grown on the field. It makes the nutrients of the soil decrease as it is using the nutrients, so it is making that decrease down. So we use these fertilizers which make the fertility and the
that nutrients, it increase the nutrients in the soil. So what are the fertilizers? The fertilizers are natural or chemical substances that contain one or more nutrients essential for plant growth. So now we will make the differentiate between natural and chemical fertilizers. So what are natural fertilizers? The natural fertilizers, these are obtained from plant and animal waste. These increase the humus content of the soil, and they are some of the example are manure, compost, bone meal, and bark of the neem. What is means the simple way that the plant and animal, what they, the waste of them are used, means such as the cow dung cake, it is used to flow in the field so that the that crop can gain the content nutrients from it, because it is very good for the soil and it doesn't harm even as it is natural, and it even increase the humus content very well. Now chemical fertilizers. So chemical fertilizers are generally and very means mostly are means produced in the factories, and the chemical fertilizers are not that good. They can increase the humus content of the soil very much, so they are less effective in increasing humus content than the natural fertilizers. So some of the example are urea and ammonium sulfate, potash, NPK. NPK generally stands for nitrogen, phosphorus, and potassium. This is one of the most important and very good fertilizer, chemical fertilizers, which the farmers use in the field. Now we'll proceed with the next slide. The next process which we have discussed is sowing of the seeds. So what is sowing? Sowing is the process of planting seeds in the soil. So now we will discuss the following points must be kept in mind while sowing. So the things are, seeds should be sown at appropriate depth, distance from one another. मीन्स दैट कि ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आपने इधर लगाया थोड़ी सी डिस्टेंस पे, फिर दूसरा बिल्कुल पास में लगा दिया. करेक्ट डिस्टेंस होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस. और क्या इसका मतलब ना क्या कॉजेज हो सकते हैं कि ओवर क्राउडिंग, अगर हम एक के बाद एक लगा देंगे और डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ओवर क्राउडिंग होगी, जिसकी वजह से ना कंपटीशन हो जाएगा एयर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स. तो क्या होगा, जो यंग प्लांट्स होंगे ना उन्हें प्रॉपर ये सब नहीं मिल पाएंगे, और ऐसे कंपटीशन की वजह से हार्मफुल हो सकता है प्लांट्स के लिए, और ग्रोथ जो है उनकी रुक सकती है, मतलब आगे ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आएंगी. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सीड्स शुड बी ग्रोन एट द करेक्ट डेप्थ, neither too shallow nor too deep. Means that the seeds which we are sowing, it should be at the correct depth. Means ज्यादा ऊपर भी नहीं और ज्यादा अंदर जमीन में भी नहीं होने चाहिए. तो so and the thing is that sowing can be done either manually or with the help of a implement that is known as seed drill. Now we will discuss this also. What is manual sowing? This process involves direct sprinkling of the seeds into the field or digging the plant, digging in the soil and planting the seeds. Means the seeds which are sown in this manner are not distributed evenly. They are unevenly distributed. Means sometimes it happens that some of them go at a correct distance and some of them remains at very close, which makes the means we have means discuss na ki what are the points which we need to remember while sowing the seeds. So this point, that the correct depth and makes the difference in this manual sowing. And the next is using a seed drill. A seed drill can be pulled across the field using bullocks or a tractor. Seeds sown using a seed drill are distributed evenly and placed at the correct that in the soil. See, this is a seed drill. Through this it has a tires which you can easily move through the field, and the means seeds which are sown through these are very means बहुत ही आसानी से ये सीड्स जो है करेक्ट डेप्थ, करेक्ट डिस्टेंस पे सो की जाती है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर वो हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं कि कहाँ कहाँ सोन करना है सीड्स, वो सब हमारे ध्यान में रहता है, और बिल्कुल बीच में उनका कंपटीशन नहीं होता, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इरिगेशन.
So what is irrigation? Irrigation refers to artificial application of water to the soil for assisting the growth of the crops. No, means irrigation simply we can say watering the plants. So irrigation, the methods of irrigation can be considered under two broad categories, that is traditional and modern methods. What are the traditional methods? The traditional methods are canal irrigation, furrow irrigation. As you can see, this is the furrow irrigation. The water is supplied over all the field, and the chain pump mode are some of the example of the traditional methods of irrigation. And these methods are very cheaper, but what they do, they are means they lead to the wastage of the water. वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है पानी का, ये चीपर जरूर होता है लेकिन क्या होता है वेस्टेज बहुत होता है, कभी कभार तो क्रॉप्स में ना ज्यादा पानी होने की वजह से प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं. अब नेक्स्ट modern methods. So sprinkler irrigation and drip irrigation are the examples of modern methods. These methods help in saving of water. ये जो मेथड्स होते हैं ना, इनकी वजह से जो पानी है वो काफी ज्यादा सेव होता है, मतलब एक्सेस अमाउंट में नहीं, बिल्कुल एसेंशियल, बहुत ही जो हमें चाहिए होता है प्लांट्स को, प्रॉपर प्लांट मीन ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, प्रॉपर वाटर मिलता है. और द बेस्ट वन इज ड्रिप इरिगेशन, दिस वन. So it gives the drop by drop to the plant, so the wastage of water is negligible. And now we will proceed further. The excess water on the field may cause a condition called waterlogging, which harm the crop by decreasing the amount of air available to the soil and the roots, leading to an increase in the salt content of the soil, which we say salinity. So we have discussed that in the traditional methods, what the farmers are doing, they are giving the water to the crops unevenly, and the water is more and more, बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो सॉइल के अंदर की सैलिनिटी, सॉल्ट कंटेंट होता है वो अपराइज हो जाता है और सैलिनिटी बढ़ जाती है उसकी वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है कभी कभार बहुत प्लांट्स को हार्म होता है, ग्रोथ बहुत ही हार्म हो जाती है, और जो फेयर अमाउंट ऑफ जो एयर वगैरह होती है वो हमें नहीं मिल पाती है उसे, क्योंकि क्या होता है वो ब्लॉकेज हो जाता है, तो प्लांट्स को एयर का कंटेंट जो होते हैं उन्हें चाहिए होता है अपने फूड प्रिपरेशन के लिए, वो सब नहीं हो पाता. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज डिक्रीजिंग इन दिस वे. नाउ वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट, weeding and crop protection. Undesirable plants which are grown in the field are known as weeds, and some of the example of the weeds are amaranthus, चौलाई भी हम लोग कहते हैं इसे, wild oat grass and chenopodium बथुआ in Hindi. So these are the examples of weeds. So what the removal of these weeds, this process, the removal of the process is known as weeding. So weeding can also be done either manually or by using the chemical fertilizers. Manual weeding. So manual weeding can be uprooted either by hand or with the help of implements such as harrow, trowel and hoe. So what is manual weeding? Manual weeding means by hands. तो क्या है कि हम लोग या तो अपने hands के थ्रू सिंपली जो weeds है उन्हें निकाल सकते हैं, और आइदर हम लोग हैरो, ट्रॉवल या हो जैसे इम्प्लीमेंट्स यानी कि जो टूल्स होते हैं उन्हें यूज करके इन्हें हटा सकते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? इट इज टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, बहुत टाइम लेता है. मे इवन लेड टू द एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ डिजायर्ड क्रॉप्स. और क्या होता है कभी कभार जैसे हम लोग रिमूव कर रहे हैं तो होता है कि जैसे हैरो, ट्रॉवल, समटाइम हैंड्स इवन, तो क्या हटाते हुए जो हमारी डिजायर्ड अच्छी क्रॉप है जो हमने ग्रो करी है वो गलती से हट जाती है उसकी वजह से, और इसकी वजह से हमारी क्रॉप जो है वो भी डैमेज हो सकती है. तो ये एक डिसएडवांटेज, बिग डिसएडवांटेज है जो फेस करते हैं. तो द नेक्स्ट थिंग इज यूजिंग वीडीसाइड्स, मींस द केमिकल. ओके, तो weedicide is a chemical that is used to destroy crop weeds. So weedicides destroy the weeds without affecting the crops. Crops वगैरह अफेक्ट नहीं होती, जैसे कि मैनुअल वीडिंग में डिसएडवांटेज था कि ना हम लोग हैंड्स वगैरह जब यूज करते तो डिजायर्ड क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वो सब इसमें नहीं होता है. केमिकल्स वाले में बिल्कुल भी ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. डेलेपन, मेटाफ्लोर एंड सिजियाजाइन are examples of the weedicides. Okay, so let's proceed with another.
harvesting. This is the second last process which we do in the agriculture practices. So harvesting, the process of cutting and gathering of crops is called harvesting. Harvesting of the cereal crops can also be done either manually or by the help of with the help of sickle. Manually में sickle का help लेते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये sickle है, इसके थ्रू हम लोग करते हैं manually, और by the harvesters machines वगैरह, ये machines. और क्या होता है कि जैसे हम लोग थ्रेशिंग वगैरह जो प्रोसेस होता है बाकी आगे का कटिंग के बाद, तो थ्रेशिंग जो है वो भी हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं. थ्रेशिंग वो आइदर उससे कर सकते हैं, और बाकी जो हार्वेस्टर होता है इसी के अंदर मशीन्स फिट होती हैं जो थ्रेशिंग भी प्रॉपर कर देती हैं. और आफ्टर दैट विनोइंग प्रोसेस, तो दैट कैन आल्सो बी डन आइदर मैनुअली और machines, so there are winnowing machines even. So let's proceed with another slide, that is storage. The harvested grains need to be stored before they can be consumed. Consumption, उनसे पहले उन्हें स्टोर किया जाना चाहिए. और हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जो हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो प्रॉपर, मतलब कि ना जहाँ पे भी स्टोर कर रहे हैं वो एरिया कंप्लीटली ड्राई हो, और जो ग्रेन्स हम लोग वहाँ पे स्टोर करेंगे वो भी ड्राई रहे, ताकि मॉइस्चर की वजह से वो खराब ना हो. और क्या है कि हम लोग जैसे वहाँ पे पेस्ट और पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड जो है वो भी स्प्रे कर देते हैं, ताकि क्या होता है कि अगर एक जगह खूब सारे रहते हैं ना प्लांट्स वगैरह, तो उनका भी ग्रोथ होने का चांसेस रहता है, ये मतलब एक हो सकता है ऐसे चांसेस, तो हम लोग ये भी स्प्रे कर देते हैं. तो जो बल्क स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स है इज डन इन द ग्रेनरीज एंड सिलोज. ये एरियाज होते हैं जहाँ पे हम लोग बल्क स्टोरेज करते हैं ग्रेन्स का. ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रेनरीज हैं, यहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं, मतलब सिलोज वगैरह, तो यहाँ हम लोग स्टोर करते हैं हमारे उसको. सो लेट्स सम अप विद द टॉपिक. So what we have discussed is food from the plants, what the plants which we get the crops, the things which we eat from, which we get from plants, and the agriculture practices means from soil preparation to harvesting and storage. This we have discussed till now. And thank you friends, and in next video I will be bringing you the increasing of crop yield and the other topics which we need to discuss.